Hello and namaskar. Welcome to the series of linear integrated circuit, and today we are going to discuss about the characteristics of an ideal op amp. So here we have operational amplifier in which these two are the input terminals, that is at pin number 2 and 3 ये input terminal हो गए, and we have output at 6 नंबर पिन, 6 नंबर पिन पर ये आउटपुट हो गया और दो डीसी सप्लाई लगी हुई हैं जो 4 और 7 नंबर पिन पर होती हैं. सो व्हाट आर द आइडियल पैरामीटर्स ऑफ this op amp? So here we must know that for any amplifier we can write for any amplifier, for any perfect amplifier, for any perfect amplifier, the gain should be infinite. The gain should be infinite. The gain has to be infinite, and we know that the gain can be written as A is equal to V output divided by V input. This is the output voltage of the amplifier. This is the output voltage of the amplifier, and this one is input voltage of the amplifier. So the difference of these two voltages is the gain. So for ideal amplifier, this should be infinite. That means this is the infinite open loop gain. This is the infinite open loop gain. That means for even smallest difference between the input is amplified to a very large output. अगर हम op amp के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, if we will talk about the context of op amp, तो इसका ओपन लूप गेन हो जाएगा, this is V output voltage डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेजेस का डिफरेंस, जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज लगे हैं उनका डिफरेंस. जैसे ये अगर हम कहें दिस इज द op amp, ये माइनस प्लस, this is the inverting terminal, this is non-inverting terminal, and we are taking output from this 6 number pin. तो ये आपका हो गया V1, this is V2. So this is the difference VID, that is V1 minus V2, since it is amplifying the difference of V1 minus V2. So this is the gain. This should be infinite. For ideal op amp this should be infinite. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है तो भी वो उसको बड़े लार्ज आउटपुट पर हमें ले जा सकता है. अगर गेन ज़्यादा है तो स्मॉल डिफरेंस ऑफ इनपुट विल बी एम्प्लीफाइड टू अ वेरी लार्ज आउटपुट. सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज इनफाइनाइट ओपन लूप गेन. दूसरा, वी हैव सीन फॉर एनी परफेक्ट एम्पलीफायर the input resistance should be infinite. Input resistance should be infinite and output resistance has to be zero. Input resistance ज़्यादा होना चाहिए और output resistance कम होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि it never takes current from the input source. अगर input resistance ज़्यादा होगा, अगर हम op amp के context में बात करें तो यहाँ हम देखेंगे, suppose this is the op amp minus plus. So the input resistance will be between these two terminals V1 and V2. तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में this is the input resistance. This is the input resistance. और ये input resistance क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए. अगर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो उससे क्या होगा? There should not be any current between these two terminals. The current will become zero. Current it never takes current from the input source. यहाँ पर जो भी वोल्टेज लगा होगा उससे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा. दैट मीन्स ये दोनों के दोनों टर्मिनल आइसोलेट रहेंगे. फॉर एनी परफेक्ट एम्पलीफायर द इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट. इसी तरह से आउटपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए. द आउटपुट रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो. अगर आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो होगा दैट मीन्स कि इट कैन ड्राइव एनी लोड विदाउट लूजिंग सिग्नल स्ट्रेंथ. अगर हम कहें आउटपुट रेजिस्टेंस तो यहाँ पर ये हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस, दिस इज द आउटपुट रेजिस्टेंस. अगर इसका वैल्यू जीरो होगा तो जो भी हम लोड यहाँ कनेक्ट करेंगे फॉर गेटिंग द आउटपुट, लेट्स से दिस इज RL, तो इस RL
की वजह से जो आउटपुट मिलेगा उसमें किसी भी तरह का सिग्नल लॉस नहीं होगा। अगर ये आउटपुट 0 होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस अगर 0 होगा, तो जो भी सिग्नल आ रहा होगा दैट इज सिंपली गेटिंग इट द आउटपुट, उसमें किसी भी तरह का लॉस हमें नहीं मिलेगा। सो फॉर perfect amplifier, input resistance must be infinite and output resistance has to be 0. So we have covered these two terminal. Input impedance is infinite and 0 output impedance. Next is bandwidth. Bandwidth should be infinite. Bandwidth should be infinite. Bandwidth must be infinite. What does it mean? If your bandwidth is infinite, that means op amp can amplify signals of all frequencies, from DC. That means DC signal, that means 0 hertz to very high. That can be very high, that it can be called as megahertz. So अगर bandwidth infinite होगा तो operational amplifier can amplify any kind of frequency of the signal. Next is, so we have discussed about this. This is the infinite bandwidth. Next is CMRR. This is CMRR. This should be infinite. What does it mean? CMRR is basically common mode rejection ratio. Common mode rejection ratio. We will discuss the formula of it, but इसको समझना है. This parameter defines the noise rejection. ये बताएगा कि नॉइज को कितना रिजेक्ट कर पा रहा है नॉइज रिजेक्शन पैरामीटर. अगर हम चाहते हैं कि दोनों इनपुट टर्मिनल में जो डिफरेंस एम्पलीफाई हो रहा है उस डिफरेंस में किसी भी तरह का नॉइज ना हो, तो CMRR का वैल्यू शुड बी इनफाइनाइट. इट शुड बी इनफाइनाइट. तो ये क्या करेगा? ये रिजेक्ट करेगा कोई भी नॉइज कॉमन टू बोथ इनपुट. इस इनपुट और इस इनपुट दोनों में ही ये क्या करेगा? जो भी नॉइज होगा उस नॉइज को रिजेक्ट करने का काम करेगा. सो दिस इज द CMRR. दिस वन इज V1, this is V2. So it will simply cancel the noise to both the inputs, only amplifies the difference. So ये help करेगा noise को reject करने के लिए. So this CMRR should be infinite. Next is PSRR. This is basically power supply. This is known as power supply rejection ratio. This is power supply rejection ratio, PSRR. So इसका मतलब है कि अगर हम पावर सप्लाई में कोई भी चेंजेस करते हैं, CMRR के इनपुट सिग्नल जहाँ भी अप्लाई किया है, इफ वी आर चेंजिंग द पावर सप्लाई, तो उससे हमारा आउटपुट में अफेक्ट नहीं होना चाहिए. If this value is infinite, that means कि changes in the input signal, changes in the power in the input signal, that will not affect the output. So we can write here changes in power supply, do not affect output. And the ideal value of this PSRR should be infinite. अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनपुट के सिग्नल की पावर सप्लाई अगर चेंज करते भी है तो हमारा आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज 0
offset null. So we have discussed this PSRR also. Next is zero offset null. कहने का मतलब है कि आउटपुट में जो भी चेंजेस होंगे दैट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट. अगर हम इनपुट बदलें तो ही हमारा आउटपुट चेंज होना चाहिए. तो देखो इसका मतलब है जीरो ऑफसेट वोल्टेज का मतलब है कि वी आर राइटिंग हियर जीरो offset voltage means the output is exactly zero. The output is exactly zero when V1 become V2, means input become same. Inputs are सेम. अगर दोनों इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो हो जाना चाहिए, बिकॉज़ डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा और डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो आउटपुट भी ज़ीरो होना चाहिए. तो दिस इज़ नोन एज़ ज़ीरो ऑफसेट नल. बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है बिकॉज़ वी आर यूजिंग टू एक्सटर्नल सप्लाई. यहाँ पर हम डीसी सप्लाई भी यूज़ कर रहे हैं, जो हम लिखते हैं प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी. सिंस वी आर यूजिंग डीसी सप्लाई तो आउटपुट ज़ीरो नहीं आता है. इवन हमारे इनपुट सिग्नल दोनों सेम है फिर भी आउटपुट ज़ीरो नहीं आता है बिकॉज़ ऑफ दिस डीसी सप्लाई. सो आइडियली दिस शुड बी ज़ीरो, आउटपुट शुड बी ज़ीरो. दिस इज़ नोन एज़ ज़ीरो ऑफसेट वोल्टेज. नेक्स्ट इज़ स्लीव रेट. सो नेक्स्ट आइडियल ओप एम्प पैरामीटर इज़ स्लीव रेट. बेसिकली स्लीव रेट बताता है कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. This represent the change in output with respect to time. Means अगर हमने इनपुट में कोई भी चेंज किया इंस्टेंटली वो चेंज आपके आउटपुट में भी दिखना चाहिए. सो दिस स्लीव रेट द वैल्यू शुड बी इनफाइनाइट. अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनपुट सिग्नल में माइनर चेंज, इनपुट में अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो वो चेंज आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सो दिस बेसिकली एक्सप्लेन्स दैट व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन द output with respect to time whenever we are changing the input signal. So these all are the ideal op amp parameter. In practical sense, these must have some kind of finite values, but in ideal case some of the parameters are having infinite value, that like infinite open loop gain, this should be infinite. Input resistance should be infinite. Output resistance must be zero. Its bandwidth must be infinite so that it can amplify any frequency signal. CMRR ये basically बताता है noise को reject करने की capability. CMRR should be infinite. PSRR should be infinite. Power supply rejection ratio. Input offset voltage अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. अगर दोनों इनपुट सिग्नल बराबर हो जाए तो आउटपुट ज़ीरो आना चाहिए. नेक्स्ट इज स्लीव रेट. स्लीव रेट शुड बी इनफाइनाइट, दैट इज द चेंज इन द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम इनपुट में कोई भी चेंज करते हैं तो आउटपुट में वो चेंज दिखना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल ओप एम्प. सो thank you for watching this video, and we will discuss about equivalent circuit of an op amp in next video.